So, children, today we will have a quick look on the chapter, and any problem if you have, we can discuss it on that. And please repeat fluid friction. Pardon? किसी को टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो Please explain fluid friction. Ma'am, please repeat fluid friction. फ्लूइड फ्रिक्शन, ओके ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन रिपीट कर देते हैं. Ma'am, please mute all. Now, here we are talking only Riya Ranjan. Close your, just mute your mic and all of you, please. Only Riya Ranjan is there whose mic is unmuted. Please mute it. Riya Ranjan. Okay, we are talking about fluid friction. हम लोग fluid friction की बात कर रहे हैं. Now, in this fluid friction, we have talked about friction in the sense of solids. Solids के sense में हम लोग बात किए हुए हैं friction के बारे में. Now, today we are going to talk about fluid friction. Although we have completed this chapter, but if you are having any problem, then we will just discuss it. Fluid friction is the friction which is taking place in case of liquids and in gaseous system, like wind, water, those substances which are moving in this surface, on this surface, like air or water. Then does the friction exist over there, and what are the factors on which they depend? These questions we have in our mind. Yes, friction is working in the liquid sense also, when any object is moving on the liquid, and in gaseous state also. But fluid friction has got its own dependence, that it will depend on the nature of fluid. We all know that some fluid are having more density than the other one. So it will depend on the nature of fluid, in which fluid that object is moving. अगर fluid dense होगा, तो उसका force of friction ज़्यादा है, ठीक है? Then shape of the moving object. I explained you, I told you yesterday also that the objects which are moving in fluid, that is air or water, they have got a special shape which is tapering from front and back also. And that special shape is known as the streamline, like fishes. Agar fish ki baat karo, so fishes has got this type of structure. Your boat has got this type of structure. Then aeroplane has got this type of structure. So these all objects which are moving on either water or air, they have got a special structure which makes them move or float on that surface. And for floating, and why is this a streamlined body? Streamlined bodies are just to cut the cushion of air, the layer of air, the layer of water. And this shape is there to cut it on the
surface of water or in the surface on the surface of air. So that is why this shape is given. And you will see that racer car which has got very too much high speed, uska bhi more or less thoda isi type ka shape hota hai. That makes them move faster in the on the surface. Then it will depend on speed of the moving object. जितना ज्यादा स्पीड होगा उसका ओपोज करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा उसको. Then there was one experiment. एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया डिक्रीज कर दोगे तो फ्रिक्शन का या उसका स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो इसके लिए आपको क्या करना था, एक कंटेनर लेना है, उसमें एक बॉल बनाना है बाय क्रशिंग और क्रम्बलिंग द पेपर, और उस एक आपको फ्लैट पेपर जैसे आपका रेक्टेंगुलर शेप का रहता है उसी शेप का पेपर लेना, एंड यू हैव टू अलाउ इट टू ड्रॉप. ये आपका पेपर है, दिस वन इज योर पेपर, और ये आपका क्रश्ड या क्रम्बल्ड पेपर. So which one will move with a more speed? कौन सा ज्यादा स्पीड से मूव करेगा? Crumble paper. Crumble paper. Crumble Why paper. you know the answer? Paper. क्यों crumbled paper? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो छोटा हो गया. सरफेस एरिया मतलब दिस एरिया, द एरिया विच इज एट द बॉटम, वो एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में कम है. तो जिसका कम होगा वो जल्दी ज्यादा स्पीड अटेन करे. So this is the cause of the change in the speed, that surface area here matters a lot. Surface area matter करता है कि कोई ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करेगा या स्लोली मूव करेगा. And for that we know that this type of flow which is carried out by the streamlined bodies, they are known as streamlined flow. And you can have a look on all these examples which are given about the aeroplane, steamers or boats, fishes, birds, they all are having this type of streamlined bodies. यहाँ तक सबको clear हो गया? Yes or no? Please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे. ठीक है, Okay, ma'am. लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, in which direction does the force of friction work? If we talk about this question, then what will you say? Opposite to the motion. Opposite direction of Opposite moving side. object. Opposite to the Tangential direction. Opposite to the direction. एक बुक में नाम है ऑपोजिट, तो हम आपको समझने के लिए बोलते हैं Tangential direction. tangential direction. ठीक है, दैट इज द एप्रोप्रिएट वर्ड. इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग रीड करो चैप्टर. जब समझा रहे होते हैं तो हमको थोड़ा लैंग्वेज को सिंपल करना होता है, तो आप ऑपोजिट ना बोल के टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलिएगा. देन if you throw a ball, will it stop by itself after a few minutes or not? It will stop. it will stop. It will stop. It will stop. Why? Give reason. Because of the friction. Because Because of the friction. because The friction force is of acting friction opposite is motion. due to Opposite to action the of that motion of ball. Because the force of Because friction friction will opposes oppose the its relative motion, motion. making it So to stop. after some time, we will see
that the ball stops by itself. If you are paddling a bicycle and you have to climb suppose a bridge, in which direction, while going up or while coming down from the bridge, you will have to paddle more. While going up. जब आप bridge While चढ़ going रहे up. हो, Going up. While going up. While going up. While going up. why going up? Because gravitational force is acting in the opposite direction of motion. Big gravitational force Gravitational force की बात कर रहे हैं that क्या? body fall. जिस सेंस में बात कर रहे हैं पहले उसी सेंस पर जवाब दीजिए आप. Because force of friction is working, and if you are going on a you can say greater height, bridges का height क्या होता है? Greater होता है. तो उस समय आपका स्पीड क्या हो जाएगा? जब आप ब्रिज पर क्लाइंब ये करते हो, चढ़ते हो या क्लाइंब करते हो, जो भी वर्ड यूज करो, तो आपका स्पीड स्लो होता है या फास्ट होता है? आई एम टॉकिंग अबाउट साइकिलिंग. साइकिलिंग में Slow. आपका एनर्जी लग रहा है कि आपको फोर्स के बारे में पता है वहां. Slow. Force will be more or less. Less. Force less मैं लगता है more. आपको जब आप More. करते हो. More, but speed will be slow. और लगता है आप देखते होंगे कि आप अपना बहुत ज्यादा एफर्ट उसमें लगाते हो. जैसे आप रिक्शा पुलर को देख लो, जब वो कोई ब्रिज चढ़ाना होता है और उसके ये में कोई पैसेंजर बैठा होता है, तो वो पैडल नहीं कर पाता है. दे कांट पैडल बिकॉज इट इज सच अ स्टीप रोड. वो इतना चढ़ाई होता है कि उसको वो बैलेंस करने के लिए अपना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है. बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज कमिंग डाउन द ब्रिज इंक्लाइंड प्लेन पर, तो आप थोड़ा कम पैडलिंग भी करोगे तो आप देखोगे स्मूथली वहां से आप ट्रैवल कर पा रहे हो, चल पा रहे हो. बट एट दैट टाइम ऑल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वर्किंग ओवर देयर to keep your rickshaw in balance or keep your cycle in balance. But we enjoy coming down a bridge, है ना? यही होता है आपका हिल्स में भी. लेकिन हिल्स का अगर हम एक एग्जांपल दें कि वहां से एक बॉल आप थ्रो किए, तो क्या वो बॉल चलते जाएगा along the hill or it will stop somewhere? It will stop. It will stop somewhere. Due to friction. In the same way, the rickshaw or the cycle handle has got a brake रहता है, और उस ब्रेक से जब हम नीचे उतरते हैं तो ब्रेक को हमेशा हमको अपने कंट्रोल में रखना होता है. Why we want to keep it in control? So that we do not get overcome with speed. And there the rolling friction is acting over there. वहां रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इसलिए हम ज्यादा स्पीड अटेन ना कर ले और फॉल ना कर जाएं. इसके कारण हम उसको कंट्रोल में रखने के लिए ब्रेक सप्लाई करते हैं, और ब्रेक क्या करता है? हमारे फ्रिक्शन को एक्सीड करता, मतलब वो ग्रेटर हाइट पर ले जाता है, और उसके कारण हमारा साइकिल बैलेंस. Is it clear? Yes, सबको ma'am. ये Yes, बात ma'am. समझ में आई ना? Now what is the cause Yes, of ma'am. friction? फ्रिक्शन का कॉज क्या है? Roughness of Roughness and surface. smoothness of the Irregularities of the surface. Irregularities of the surface, roughness of the surface, interlocking between the surface, these all are the cause of friction. Then what are the factors which affect the friction? nature of the object in contact. Perpendicular force between the. Yes, nature of the two surfaces in contact, and
Pressure, force pressing the Perpendicular force together. pressing the two surfaces Force together. pressing the Force two pressing surface. the two surfaces together. Now this we will take another example. एक और example लेंगे. एक बॉक्स है जिसको आपको मूव करना है आपके स्कूल के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर, और उसमें आपका फोर्स रिक्वायर्ड. क्लियर? उसका वेट एक टीम को एक सर्टेन 20 kg का बॉक्स मिला, दूसरा टीम बी को सपोज कर लो 50 kg का बॉक्स मिला, and the members who are applying the force are same. 5 members are here also in team A and 5 members are there also in team B. दोनों को equal distance में बॉक्स को ले जाना. Which team will require more force? Team Team A. B. The team which has Team A. Team A. Team How B, many ma'am. Team which has Ma'am, Team B team which B. has 50 Team B. kg. the team which has 50 will kgs require of more force. Team B. So force of friction किसमें ज्यादा होगा? Team B. Team B. Team जिससे B. आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो उसका ऑपोजिशन भी वही होगा, वही होगा. ठीक है? Then define static friction. Static friction is a kind of friction which comes into play when force applied on a body, when force is applied on a body at rest. Yes, ठीक है. और किसी कोई बोल सकते हो तो बोलो. Static friction. The self-adjusting force of friction that exists between a stationary object and the surface on which it has been kept. ठीक है. Then what is sliding friction? The friction that acts between an object and a surface when the between an object is sliding when over the that surface. object is sliding over. हाँ, बोलो फिर से बोलो. Who is trying? Okay, Anurag, if you are raising your hand, you can tell. The friction yes ma'am, the friction that acts between an object and surface when the object is sliding over that surface. Okay. Which one is greater, static friction or sliding friction? Yes, Static Jagresh. friction. Static friction. Jagresh, static friction. Static friction. Static friction. Static friction is greater than sliding friction. Okay. Then now why it is easier to slide an object than why it is easier to keep a moving object in motion than to bring a static object to motion? Because the sliding friction didn't get a efficient time to interlock with the surface. Did enough time to get interlocked. Yes. Because the sliding friction do not get enough time to be interlocked, or the surfaces do not get enough time to interlock. Okay? Please go through the chapter like this only. इस तरह से ही आप लोग जाइए ताकि आप लोगों को you are ready to answer the question whatever is put. मैम compression purified air में lubrication कैसे होता है? हाँ, क्या बोले? मैम compressed and purified air में lubrication कैसे होता है? मतलब ये हम समझ नहीं रहे हैं तुम्हारा क्वेश्चन. Compressed और Purified air. हाँ तो मैम purified air. Ma'am, lubrication कैसे होता है? lubrication कैसे होता है? लुब्रिकेशन कैसे होता है वो तुम्हारा क्वेश्चन एप्रोप्रिएट नहीं है. क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कॉम्प्रेस्ड एयर लुब्रिकेंट की तरह कैसे काम करता है. तुम्हारे कहने का मतलब ये है ना? यस मैम. प्यूरिफाइड एयर लुब्रिकेशन की काम कैसे करता है? लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्मूथनेस देना.
तो अगर कॉम्प्रेस्ड एयर है तो जिसमें कि इम्प्यूरिटीज कम है, बहुत ही कम, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, तो दैट मीन्स मोर, you can say that can float more smoothly as compared to the normal air. तो उसमें जो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या उस पर जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट. तो इसलिए वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है. लुब्रिकेशन का मतलब मेकिंग एनीथिंग मूव स्मूथर और फास्टर. तो ये कॉम्प्रेस्ड एयर का वही काम है. और ये हाई स्पीडी व्हीकल्स जो बहुत ज्यादा स्पीड में मूव करते हैं, और आपको जैसे कॉम्प्रेस्ड फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं, उसी तरह से ये इस तरह का एयर भी यूज किया जाता है, हाईली कॉम्प्रेस्ड एयर, so that the objects which are moving in that environment or that area does not have any impurities, and if impurities will not be there, then the friction will also be very less होगा. और जब फ्रिक्शन कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि उसको अपोज करने वाला नहीं ना होगा, उसको कम करने वाला नहीं होगा, इसलिए वो बहुत फास्ट स्पीड में मूव करेगा. इज इट क्लियर? ठीक है. Yes, Who asked ma'am. this question? हाँ. Yes, ma'am. Now here we were talking about. Now children, when you are reading, 3 questions में difference हमेशा याद रखिएगा. क्या क्या 3 क्वेश्चन है आप सुनो. How is friction a necessity? Explain with few examples. ये एक क्वेश्चन हुआ जो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में. दूसरा क्वेश्चन है, how is friction considered to be a nuisance? Explain with few examples. And what are the methods of increasing friction? What are the methods of reducing friction? ये चारों क्वेश्चन जो है ये related to each other. So sometimes in exam अगर वो यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है, नेसेसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ बच्चे गलती करके न्यूसेंस वाला आंसर लिख देते हैं, और कुछ बच्चे अगर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहा है तो दे स्टार्ट आंसरिंग इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. चारों का पॉइंट अलग अलग है और सबका एग्जाम्पल एटलीस्ट 2-3 जो आपके बुक में है विच इज रिलेटेड टू डे ऑल्सो, आपको वो एग्जाम्पल्स याद रखना है इन दिस चैप्टर. इट इज वेरी नेसेसरी. जो भी स्मॉल एग्जाम्पल्स आर गिवन, प्लीज रिमेंबर. देन which friction is the least? Which type of friction is the least? Yes, Jagrit. Rolling friction. Rolling friction. Rolling friction. Rolling friction. Rolling friction. भी जानते ही होंगे. Jagrit, you know the reason why? Yes, in rolling friction the area is less. That's why for friction is also less. So rolling friction is Area least. independent. Area का reason नहीं होगा इसमें. Because they get less time to interlock. The surfaces ma'am. get less time to interlock. That is why it is less. Rolling friction is less. Yes. How is friction a necessity? Give a few examples. How is Friction It helps in walking. Next. It helps to roll the objects. Performing small day-to-day activities. Yes. और perform Rolling. different activities में क्या बोल सकते हो तुम लोग? Writing It with a helps us pencil. to hold Writing the with- ink, pencil, Holding a chalks, etc. pencil. A class. Writing, then holding your
glass of water, then Fix a nail in the wall. fixing a nail. Yes, these all examples you will have to give. Then after that, what are the examples of friction as a nuisance or a evil? Friction Give few examples of nuisance or evil. Friction opposes any relative motion between two objects in contact. Friction leads to the Happens if it is opposite. Wear and tear of the object. friction oppose कर रहा है, leads तो to the होता क्या wastage है? of energy. You will write this line. Friction leads to a Friction. leads to wastage of loss of energy. Wastage of Wear and energy or Wear loss. and tear also. Huh? Ma'am, wear and tear also. Wear and tear also. Friction is responsible for wear and tear. और अगर आपके क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन करना है 2-3 मार्क्स का है, तो आप उसका फुट ओवर ब्रिज का एग्जांपल दोगे, ग्रुप्स ऑफ टायर्स के बारे में दोगे कि वो उसको चेंज करना पड़ता है फ्रिक्शन के कारण, फिर हमारा शूज का सोल वियर आउट हो जाता है, वो आउट होता है, तो उसको हमको चेंज करना होता है। ये सब एग्जांपल आप उसमें दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिनोटेड इन दैट क्वेश्चन। Then, what are the methods of increasing friction? Lubrication, ball bearing, By and polishing the surface. Polishing, Again, ball you are bearing. telling wrong. by increasing the irregularities of the surface in contact. Pardon, who was telling? Bolo. By increasing the irregularities of the surface in contact and increase the thrust of between the two surfaces in contact. Make me more clear. I am talking about methods of increasing friction, not reducing. By increasing the irregularities between the two surfaces in contact. ठीक है, irregularities By लिखना है, increasing the कैसे करोगे roughness of तुम? the surface. Sheets and grooves. हाँ, don't say irregularities. How are you going to increase the irregularities? Irregularities are caused due to the nature of that surface. It cannot be increased or decreased by you. तो आपका सेंस कहने का सही है, बट आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं that is not appropriate. By increasing the treads or grooves in the tires or on the surface which they are Moving. coming in contact. ठीक है? Then sports player use such type of shoes which has got spikes or cleats in it. Then what about the athletes? Athletes, they use Chalk powders in their hands. Powders in their powder. hands. Gymnasts. Sand. Powder on their Gymnast. hands. हाँ, kabaddi player, they all use coarse substance. Soil. Then what are the methods of Soil. reducing friction? Yeah, soil. Polish a surface to reduce its Polishing, roughness. lubrication, ball Or ball bearing. bearing. Polishing, lubrication, and bond bearing. Yes, polishing, lubrication, and ball bearing. So this you can have in your question that how we can just reduce friction. Please explain with examples. So you will not only give the points, you will also explain about it. उसके बारे में explain भी करो कि how you are going to rub it with a sandpaper before polishing, and then when it becomes smooth, you have to polish it by applying particular type of paint or polish, and then you will, and in that way you are making the surface smooth and you are reducing friction or wear and tear. You are reducing the wear and tear.
क्लियर? उसी तरह lubrication का by we put oil and grease, we can reduce the friction, because the loss of energy is also to some extent it is saved, and to some extent the wear and tear of the machine parts is also saved from that lubrication process. And what are the lubricants used? Solid lubricant कौन सा है? Talcum powder. Talcum powder. Talcum powder. Talcum powder. Semi solids कौन सा है? Grease. Grease. And Grease. liquid Oil. name 3 types of lubricants which are used to reduce friction. तो आपको इस तरह से लिख देना होगा, ठीक है? So just ma'am. remember in your mind what you are studying. सब चीज कोरिलेट करके याद रखना है. Now for racer cars, which type of lubricants are used? और hovercraft, अगर hovercraft की ही बात करें तो for Compressed or hovercraft purified which type air. of lubricant is used? Compressed Question and of Compressed purified or air. purified air. Purified air and Purified. compressed air. Where are these ball bearings used? Cycle. Motors, tornadoes, Shafts of dynamos, motors, axles of vehicles, and so on. axles of vehicles. Dynamo. An axle of vehicles. Now children, anything more you want me to discuss? कुछ और है आप लोगों के दिमाग में जो आपको क्लियर करना है? Anybody? Okay, then tomorrow we will have the discussion of question answer, and for your coming exam, crop production आप लोग learn करना start कर दीजिए, because 2 chapters we have completed, 2 chapter तो हम लोग का हो गया है एग्जाम में, तो 3rd आपका crop production है, सब लोग उसको learn करो, और one day we will have a short revision of that chapter also. Okay, tomorrow we will have the discussion of question answer, so आप लोग ready हो सकते हो by just going through the chapter and question, just see it and get ready. Okay, और कुछ पूछना है? Anything more you want to ask? Yes, ma'am. हाँ बोलो. Yes, ma'am. This is from friction chapter. That yes, ma'am. अगर हम लोग ग्लास के बीच में पानी डाल देंगे और उसके ऊपर ग्लास डाल देंगे तो उससे फ्रिक्शन बढ़ता है कि घटता है? ग्लास के बीच में पानी डाल देंगे? यस सर.